Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel, and in today's video we are going to discuss about the single responsibility principle. आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में. As we discussed in our previous video about the solid design principle, in which we briefly describe all the design principles, and for now in this video we will be going to see the single responsibility principle with a practical example. तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने अपने पांचों प्रिंसिपल को और सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल को डिस्कस किया था, और इस वीडियो के अंदर हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ अपने फर्स्ट प्रिंसिपल सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस. SRP, देयर शुड बी नेवर be more than one reason for a class to change. रॉबर्ट सी मार्टिन. अंकल बॉब ने कहा कि there should never be more than one reason for a class to change. क्या मतलब है इसका? The single responsibility principle is a computer programming principle that states that every module, class or function should have a responsibility for a single part of the functionality provided by the software, and the responsibility should be entirely encapsulated by the class. तो इसको समझने के लिए ना इस डायग्राम पे आते हैं कि इतनी लफाजियाँ, इट्स नॉट लाइक कि हम इसको आसान. सो दिस पिक्चर रिप्रेजेंट्स द क्लियर definition of the single responsibility principle. You can see we have two tools. एक हमारे पास हैमर और दूसरी ये हमारे पास है, ठीक है. इट्स सम काइंड ऑफ मल्टीपल नाइफ और ब्लेड्स इट हैज कंटेनिंग, बट ये कोई एक काम भी ना सही तरीके से नहीं कर सकती. इट इज़ नॉट बीन गुड फॉर anything. It has lots of function in a single thing, but is good for nothing. ना ये अच्छी तरह से हैमर की तरह यूज हो सकती है, ना ही ये किसी चीज को सही तरीके से काट सकती है, बिकॉज इट डजंट लुक लाइक कि एक चीज के अंदर सारी क्वालिटीज हो और आप उसके अंदर डाल दो. सो दिस वॉन्ट बी पॉसिबल. बट ये हैमर है, इट इज क्वाइट इनफ टू यूज एज अ हैमर दिस टूल. क्यों? क्योंकि ये वेल बैलेंस, वेल मेड टूल टू डील विद द नेल. But this has lots of feature, but it is not good for the quality is not good. So this is what we call the single responsibility principle. कि अगर जिसका जो काम है, जिस क्लास का जो काम है और जो फंक्शंस है वो उसी क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट हो, सो यही सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में. चलो इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल की तरफ देखते हैं. लेट्स फ्लिप टू द विजुअल स्टूडियो. सो आई हैव ओपन द कंसोल एप्लीकेशन. मैं क्या करूँगा, एक क्लास ऐड करूँगा. आई विल बी एडिंग द मॉडल. Let's add a folder for the model, and in that folder I'm going to add a employee class. Let's make it public. Prop and remove this internal ID. Prop, let's this full name. सो अभी मैं ये कर रहा हूँ कि मैं कुछ बस और भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं. डैश डैश सम मोर एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज. ठीक है, अभी मैं इसको नहीं. एंड लेट्स हैव अ मेथड पब्लिक. ओके, created date वगैरह you can add them. Let's add a method public double get salary n return
here you will write the business logic, some business logic. Public void send mail. Okay, when employee gets promotion, send. Now you can see I have a class name as employee in which I added all the attributes of the employee, the property ID, full name of employee, salary, created date, modified date of this record. And here I have a method get salaries. I can have more method related to employee, but right now I created only twice to explain you. Now you can see कि आप देखा कि मैंने एक एम्प्लॉय की क्लास बनाई है, उसके सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिख दिए कि एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स आईडी हो सकती है, फुल नेम हो सकता है, सैलरी, क्रिएटेड डेट, मॉडिफाइड डेट, और दो मेथड मैंने बनाए गेट सैलरी एंड सेंड मेल। अब आप देख रहे होंगे कि गेट सैलरी लुक्स क्वाइट रेलिवेंट टू द एम्प्लॉय क्योंकि एम्प्लॉय वर्क्स फॉर द सैलरी, बट यहाँ पे मैंने क्या किया सेंड मेल कि एक एम्प्लॉय का अगर प्रमोशन हो जाता है सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम उसको एक मेल सेंड करेंगे। तो मैंने क्या किया कि मेल का जो मेथड है आई हैव इनकैप्सुलेटेड दैट इनटू द एम्प्लॉय क्लास विच इज इररेलेवेंट टू द एम्प्लॉय। अभी क्या है कि इट लुक्स फाइन कि आपने अभी एम्प्लॉय की क्लास के अंदर मेल का मेथड बना दिया, इससे कोई एरर नहीं आना, ठीक है, ना कंपाइल टाइम, ना रन टाइम, ना ही किसी और टाइप का एरर। बट क्या हो रहा है, ये जो हो रही है ना, दिस इज द वायलेशन ऑफ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ये मैंने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों, क्योंकि सेंडिंग मेल इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय क्लास। तो मैंने जो एम्प्लॉय के अंदर क्या किया, इसको इंकैप्सुलेट कर दिया है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसको कैसे सही करना होगा, यू नीड टू हैव अ सेपरेट क्लास फॉर दिस, ठीक है। अच्छा मैंने ये बिजनेस लॉजिक नहीं लिखी यहाँ पे सारी, ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट राइटिंग एन एप्लीकेशन कोड, हम यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। सो आई विल डू व्हाट, इसको कैसे हम रिजॉल्व करेंगे, आई विल ऐड अ मेल हेल्पर क्लास, ओके। और जो आपका मेल हेल्पर वाली क्लास है, यू विल हैव दिस मेथड हियर and you will add property string send to from या send by, ठीक है। I can just copy and paste message body, message subject, and so on. So as you can see, I have done what, I have separated the logic. The mail helper is responsible to sending the mail, whether it is for employee, permanent employee, or in case of permanent employee or promotions, you can send the mail from this in this class. And while employee class has their own responsibilities. तो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से इसकी सेपरेशन की और इसको सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को वाइल नहीं से रोका, हमने उसको फॉलो किया। हमने ये किया एम्प्लॉय की क्लास के अंदर सिर्फ एम्प्लॉय का काम है, जबकि जो मेल सेंडिंग का वर्क है वो मेल हेल्पर के अंदर है। सो यू शुड सेपरेट ऑल द एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द क्लास। सो आई होप क्या ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर आपको हाउ यू फील। तो आई वांट द फीडबैक आल्सो, सो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कि कैसा। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।